नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 10th इंग्लिश मीडियम आपले ब्रीफ बाकी आहे. हिरवगार झाडासारखं ही कविता आधी आपण एक्सप्लेन केलेली आहे, तुम्ही वाचलंच असणार. तर तुम्हा मुलांना आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि काव्य सौंदर्य यानी क्या, रसग्रहण यानी क्या. तो फर्स्ट वन हम लोग लेने वाले हैं काव्य सौंदर्य. उसी ही रसग्रहण कैसे करते हैं तो बताते हैं. तो 2 लाईन्स आपको दिए हैं. झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगत उतरतात दवाचे टपोरे थेंब. इसका हमें रसग्रहण करना है. तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है आशय सौंदर्य, यानी इसी में आएगा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखनी है. हिरव्यागार झाडासारखं या कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस आहेत. झाडांचे गुण माणसाच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचे आहे हे कवितेत सांगितलेले आहे. झाडाची सहनशीलता, यानी कि जैसे पेड़ एक जगह पे ही डेवलप होता है, बड़ा होता है, उसके साथ साथ मदद करण्याची वृत्ति. तो ये वृत्ति है उनका स्वभाव कैसे कि जैसे आने जाने वाले जो यात्री हैं, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो उसके नीचे सहारे के लिए रुकते हैं. सो मदत करण्याची वृत्ती. कितीही कठीण प्रसंग आला तरी न डगमगता पाय रोवून राहण्याची वृत्ती. आता कितीही यानी कितना भी यानी बहुत बारिश हो, धूप हो, और ठंडी हो, कुछ भी हो, या कितनी भी हवा आई तो भी पेड़ जहाँ है वहीं पे ही रुकता रहता है. आप बोलो वो कैसे जाएगा? तो ये उदाहरण दिए हुए हैं कि वो कैसे एक ही जगह पे बिल्कुल आवाज न करते हुए एक जगह ध्यानस्थ ऋषि के जैसे खड़े होते हैं, साधु संत महात्मा के जैसे, यानी उनमें पेशेंस है. तो ये वृत्ति, ये स्वभाव हमें लेना चाहिए, ऐसे शिक्षा कवी ने बताई है. तो ही शिकवण देते प्रस्तुत काव्य पंक्तीतून. प्रस्तुत यानी ये जहाँ पे 2 लाइन्स दिए हैं इनके बारे में. पहाटे झाडाच्या पानावरून, यानी क्या दी हुई है लाइन्स? झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर. वही यानी बुक, जो काव्य लिखते हैं ओ. प्रस्तुत काव्य पंक्तितून, यानी यहाँ पे अभी ये जो लाइन है, ये वर्ड है, ये साइड में लिख के यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य ये लिखना होगा. क्या लिखना होगा? काव्य सौंदर्य. और उसके साथ प्रस्तुत काव्य पंक्तीतून पहाटे झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर उतरलेले दवाचे थेंब कवीला जणू प्रेरणा देतात, यानी रिस्पॉन्स देते हैं. वह कविला कविता सुझते और कवि काव्य लिखने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है. भाषिक वैशिष्ट्य, यानी इसका क्या है, इसमें क्या ऐसा दिखाई देता है, क्या वैशिष्ट्य है, इम्पॉर्टन्स. झाडाचे पान आणि वहीचे पान. काय म्हटलंय? झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर, हो ना. मग झाडाचे पान हे कसलं आहे? पेपरचं आहे. आणि वहीचं पान सॉरी झाडाचं पान हे ग्रीन है और जो बुक है, नोटबुक है, उसका भी पत्ता है, उसका भी पान है. तो झाड़ाचं, पेड़ का जो पत्ता है वो क्या सिखाता है, कौन सी प्रेरणा देता है? कवि को, जो कवि है, जो लेखक है, उन्हें स्फूर्ति देता है कि नहीं, ये सौंदर्य जो है इससे आपको लिखना है. हमारे जैसे लोग लिख पाएंगे नहीं, जिन्हें वो प्रभुत्व है वो लिखेंगे. मीन्स झाडांचे पान व वहीचे पान यातील समानता, सेम. दवाचे टपोरे थेंब, वहीच्या पानावर उमटलेले टपोरे अक्षर, यानी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत नीट और क्लीन है. और
दवाचे टपोरे थे जो मॉर्निंग में ड्रॉप्स आते हैं. ओ, कवीला स्फुरलेली कविता ही झाडाशी संबंधित है. यानी कवि ने जो कविता लिखी हुई है, स्फूर्त से जो लिखी हुई है, वो किसके बारे में है? पेड़ के बारे में है. या ठिकाणी झाडाशी मनुष्याचेही घट्ट नाते आहे असे कवी सांगतात. तर हे झालं तुमचं काव्य सौंदर्य, हो ना. मग आता याच पोयममध्ये पुन्हा 2 क्वेश्चन्स आहेत की खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. बघा तुमचा पेज नंबर 51 वर दिलेला आहे. पहिला क्वेश्चन बघा. खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिया. जेव्हा तुम्हाला आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते, अभी इसका क्या मीनिंग लिखे क्या, तो आपको तो अभी आदत हुई होगी, मगर तो भी कैसे लिखना है, तो हसावं सळसळता पानासारखं. काय दिलेलं आहे? हसावं कसं? सळसळत्या पानासारखं. यहाँ पे ता आया है, त्या आधा त और उसे या को जोड़ा है. सळसळत्या पानासारखं. मग आता हे कसं जगायचं आहे आपल्याला? कसं हसायचं आहे? आता सळसळती पानं कोणती आहे? जैसे हवा आती है, हवा आने के बाद हमारे यहाँ तो विंडोज़ वगैरह अभी स्लाइडिंग है, आपके यहाँ वगैरह तो कोई नहीं, मगर जब लकड़ी की होती है ना, तो थनाथन उसका आवाज़ आता है. तो मगर जब वृक्ष खड़ा है, उसका हवा आता है, तो कितना मस्त लगता है, ठंडी हवा हर तरह. यानी हसावं सळसळत्या मन मोकळं, मन मुराद असणे का. वाऱ्याची झुळूक आली की झाडाचे पानं सळसळतात. त्याचा आनंद देणारा आवाज होतो ठंड हवा, यानी ठंडक होती है, मन में भी प्रसन्नता तो हो, तो समर में तो ज़्यादा होती है. तसेच आयुष्य जगताना माणसाने खळखळून असावं, फ्रीली आणि आनंदी जीवन जगावं. यानी आजकल हंसना ये भी बहुत महंगा हो गया है या नहीं हुआ है? कोई ऐसा ज़्यादा हंसता नहीं है, ना फ्रीली बात करते हैं, ना कुछ, क्योंकि उन्हें फ्रेंड आए हैं. कौन से? मोबाइल. उन्हें क्यों, हम लोगों को भी वही आया है. तो सेकंड क्वेश्चन है सेम में, खालील ओळीचा तुम्हाला कळलेला अर्थ. जगावं कसं? जगावं कसं? हिरव्या झाडासारखं. झाड काय करतं? येणाऱ्या जाणाऱ्या वाटसरूंना, यानी जो आने जाने वाले यात्री है, पैदल जाने वाले, उन्हें आसरा देते हैं. इसी तरह जो बर्ड्स है या एनिमल्स है, जैसे कि एनिमल्स आप बोलेंगे शेर वगैरह भी क्या, तो अभी तो शेर भी बाहर आने लगे हैं, तो पेड़ के नीचे रुकते हैं. गैया हो, यानी क्या बोलते हैं उसे, हॉर्स वगैरह, ये सब भी वहीं रुकते हैं. पंछी भी रुकते हैं. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाटसरूंना, पक्ष्यांना आसरा देतं, उनके नीचे सब रुकते हैं. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळ्यात जीवनातील आशा पल्लवीत ठेवतो. यानी धूपकाला हो, बारिश हो, विंटर हो, तो भी वो खड़े की खड़े रहते हैं और उसके पत्ते या वो पेड़ पूरा हरा ही रहता है. शिशिरामध्ये निराश होत नाही. झाडांची पानं गळून पडली तरीही आपल्यातला हिरवेपणा, शांतता टिकवून ठेवतो. जेव्हा मैं यहाँ नहीं रहता, मैं चला जाता हूँ, मैं चली जाती हूँ, ऐसी बात होती है नहीं. लोग उसको काटते हैं तो भी वो वहीं के वहीं खड़े रहता है. म्हणजे झाडाची पानं गळून जातात, पर्ण नीचे आ जाते हैं, तो भी जब उसका ब्रांचेस यदि आपने छोटा सा भी कट करके देखा तो हरापन दिखाई देता, ग्रीन दिखाई देता है. तसे आपण माणसाने जगावे असे कवी म्हणतात. तर हा 1 लाईन्सचा 1 मार्क्स यासाठी आहे. तेव्हा हेही मार्क्स जाऊ नका देऊ, कारण पोयम तुमच्या डोळ्यासमोर असते.
है ना, आपके सामने ही पोयम रहती है तो उस हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। और लास्ट टाइम मैंने बताया किस तरह लिखना है, वहीं पे ही क्रियाबद्ध करके वहीं पे ही आंसर कैसे तैयार करना है। सो जॉर्ज लोपिस इनका ये पोयम है और अभी इसके ब्रीफ देखते हैं। झाडाचे मानवी जीवनातील स्थान याविषयी तुमचे विचार लिहा। हिरवगार झाडासारखं या कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस आहेत. पूर्ण झाले आहे या कविता संग्रहातून एक तर कविता संग्रह लिहा किंवा काव्य संग्रह लिहा, दोनपैकी एक घेतलेली आहे. हिरवगार झाडासारखं ही कविता आहे. या कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस आहे. या कविते आता मी काय केलेलं आहे, मैंने क्या किया कि पहले पोयम का नाम लिखा है, उसके बाद कवि का नाम लिखा है, उसके बाद कौन से काव्य संग्रह से लिया है वो लिखा है। हाँ, अभी ये हो गया फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यदि किसी को ये लिखना में आसान होगी तो ऐसे लिखो, नहीं तो सेकंड प्रस्तावना देखो। हिरवगार झाडासारखं ही कविता या कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस आहेत. या कवितेत झाडाचे मानवी जीवनातील स्थान याविषयी माहिती स्पष्ट केली है। मीन्स एक तो आप इस तरह के लिख सकते हो या खाली कविता का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है। अभी इसमें ब्रीफ क्वेश्चन में किस तरह इंट्रोज करते हैं इंट्रोडक्शन, तो देखो झाडाचे मानवी जीवनातील स्थान याविषयीचे विचार मांडलेले आहे किंवा याविषयीचे माहिती दिलेली है। मीन्स वही के उठाना है, यानी यहाँ पे भी आपका मार्क्स कट नहीं होगा। आंसर देखो, निसर्ग वर्णन करा असे म्हटले, ये तो अपने मन से ही आपको थोड़ा लिखना है ना, की माणसाच्या डोळ्यासमोर येतात ती हिरवीगार झाडं, पिकांनी बहरलेल्या मातृभूमीशी जखडून राहणारी झाडं. आता पिकांनी यानी फ्रूट्स आते हैं, अनाज आता है, तो क्या है कि वो सब देख के मन को प्रसन्नता आती है. झाडे एका ठिकाणी शांतपणे ध्यानस्थ बसले की ते एखाद्या ऋषीमुनीसारखे भासतात. आणि एकही जगा खडे आहे. म्हणजे झाड व ऋषीमुनी एकच, कारण जसे ऋषीमुनी पाऊस थंडीची तमा न बाळगता तपश्चर्या करतात, तसे झाडे ऊन पाऊस थंडी न बोलता निमूटपणे एकाच ठिकाणी स्थिर असतात. मीन्स इसलिए यानी पेड़ को किसकी उपमा दी है, ध्यानस्थ ऋषियों की. तो इसी तरह पेड़ भी एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं. आपल्या मातृभूमीला घट्ट धरून असतात. उसके रूट्स जो है वो जमीन में होते हैं ना. सर्व पशुपक्ष्यांना झाडाचा आधार असतो. येणारे जाणाऱ्या वाटसरूंना आसरा देण्यासाठी आनंदाने कवेत घेण्यासाठी झाडे सरसावलेली असतात. वो पेड़ के जो ब्रांचेस है वैसे इधर उधर पूरे स्प्रेड हुए हैं, तो जैसे उनके बाहु ऐसे फैले हुए हैं कि आओ मेरा सहारा लो, इसी तरह. कुऱ्हाडीचा घाव जरी झाडावर घातला तरी झाड निमूटपणे वेदना सहन करत असतात. यानी पेड़ तोड़ने के लिए कितने भी उसको मारो तोड़ो कुछ भी करो तो भी वो बदला लेता है नहीं, ते कुणाचाच बदला घेत नाही. एवढेच नव्हे तर झाडांच्या पानावर पडलेले दवबिंदू पाहून काव्यही सुचते. स्फुरते, ज्याला लिहिता है त्याने स्फुरते लिहा, जिन्हें सूझते ये तो आसान है. तो वो पेड़ के तरफ देख के या निसर्ग सौंदर्य सब जब हम देखते हैं तो हमारे मन से, इसलिए तो कितने सारे हिंदी गाने हैं, मराठी गाने हैं, उसके साथ साथ पोएम्स भी है, तो हमें वैसे काव्य पंक्ति लिखने का मन होता है. मन आनंदी होते. तसेच शिशिर ऋतूतील पानगळ यानी पत्तियां झड़ जाते हैं, तर वसंत ऋतूमध्ये येणारी नवीन पालवी, नए नए लीव्स आने लगते हैं. पुन्हा अभी जहाँ कुछ भी नहीं है, छाव भी नहीं आएगी, वहाँ सब बैठ सकते हैं नहीं. तो जब लीव्स भी आ जाते हैं, पत्ते आते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है अगेन, तो क्या होता है,
पुन्हा झाडांवर होणारा पक्ष्यांचा किलबिलाट, यानी पंछी आके बैठते हैं बर्ड्स, उनका आवाज शुरू हो जाता है. या सर्व सौंदर्याने मनाला उभारी येते, मन प्रसन्न आनंदी होते. ये 3 में से आप कुछ भी लिख सकते हो. सौंदर्याने, सुंदरतेने मनाला उभारी येते, मन प्रसन्न आनंदी होते. तो आप ये 3 में से कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो. म्हणून कवी म्हणतात, मानवाचे व झाडाचे अतूट नाते आहे, अतूट न तुटणारे. अशा या अतूट नाते असलेल्या झाडांचे गुण, यानी ये पेड़ के जो गुण हैं वो हमें लेना जरूरी है. पेशेंस है, हेल्प करने की हर एक दूसरे को, या कितना भी कठिन प्रसंग आया तो भी भाग नहीं निकलना, वहीं खड़े रह के आसरा हर एक को हेल्प करना. तो सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती, हे सर्व गुण माणसाने जीवनात आनंद मिळविण्यासाठी आपल्या अंगी बाणवावेत, आपल्या अंगी स्वीकारावेत. हा जर शब्द बाकी लिहायला सोपी है, पण ऐकिवात नाही, आपको सुनने में नहीं आता है, तो आपको क्या लिखा है. म्हणून मानवी जीवनात झाडाचे निश्चितच मोठे सहकार्य आहे, फार मोठे स्थान आहे, हे नाकारता येत नाही. कारण आपल्या आयुष्यामध्ये झाडांचं फार मोठं महत्त्व आहे. पुढचा क्वेश्चन आहे, झाडांपासून आनंदी जगणे शिकावे, या विधानातील विचार स्पष्ट करा. पुन्हा प्रस्तावना. हिरवागार झाडासारखं या कवितेचे संवेदनशील कवी जॉर्ज लोपिस. आता मी संवेदनशील कवी, तुम्ही लिहा प्रसिद्ध कवी वगैरे. कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती झाडांमध्ये असते. अभी मैंने हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. मग कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती झाडांमध्ये असते, याविषयीचे विचार मांडले आहे. आता अभी आपको एखादा फ्रेज यानी कोई पंक्ति या लाइन्स यदि पाठ है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो. मैंने लिखा है, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, ही संत तुकारामांची रचना मनाला भावते, यानी पसंत आती है. पशु पक्षी व माणसांना निवारा देणारे वृक्ष म्हणजे झाड. यहाँ पे पॉइंट. झाडांवर कितीही अन्याय झाला, तोडफोड झाली, तरी झाडे दुजाभाव न करता, दुजाभाव याने मतभेद नहीं करते हैं, सर्वांवर निरपेक्ष प्रेम करत असते. पेड़ बोलता है क्या, जा तूने मुझे पानी नहीं दिए है, जाओ जाओ आप लोग जाओ, मैं आपको छाँव नहीं दूंगा, मैं हमारे फ्रूट्स नहीं देंगे, ऐसे बोलता है नहीं. तो निरपेक्ष, कोणतीही अपेक्षा ओळखता नाही आहे. पानगळीचा ऋतू असू दे किंवा नवी पालवी फुटणारे झाड, ते कसं म्हणतं, घेता किती घेशील दो कराने. अशासारखे झाडाचे बाहू म्हणजे फांद्या, ब्रांचेस, येणाऱ्या जाणाऱ्या वाटसरूंना आसरा देण्यासाठी, आनंदाने कवेत घेण्यासाठी सरसावलेले असतात. झाड आपल्याजवळ चालत येते का, पैदल आता है हमारे पास, नहीं, हम जाते हैं तो उसका जो ब्रांचेस है, उसके जो त्याच्या ज्या फांद्या आहेत त्या किती दूर दूर स्प्रेड झालेले आहेत, है ना. तो उससे हमें आसरा मिलता है, छाँव मिलती है, निवारा मिलता है. शिशिर ऋतु निराश न होता, क्योंकि उसके पत्ते गिर जाते हैं. झाडांची पाने गळून पडली तरी त्याचा हिरवेपणा जपून ठेवणारे, शांतता टिकवून ठेवणारे झाड. म्हणून जगावं कसं, तर हिरव्या झाडासारखं आणि हसावं सळसळत्या पानांसारखे, असे मनाला आनंद देऊन जाणारे हे झाड आहे. अभी आपको लगेगा ये कैसे, कहाँ से लिखेंगे, तो सामने ही पोएम है, पोएम के लाइंस होती हैं क्वेश्चन पेपर ने, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेते रहो और अधिक अट्रॅक्टिव्ह आन्सर करो. असे मनाला आनंद, याने म्हणून जगावं कसं, तर हिरव्या झाडासारखं आणि हसावं सळसळत्या पानांसारखं, असे मनाला आनंद देऊन जाणारे हे झाड आहे. अभी सहनशीलता, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगी
घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती झाडामध्ये असते, यानी पेशेंस है, हेल्प करने की वृत्ति है। और कितना भी यानी अर्थक्वेक हो या बहुत ज़ोरों से हवा आती है या फ्लड आता है, तब भी पेड़ वहीं के वहीं होते हैं। हाँ, गिर जाते हैं मगर वहीं से ही वो आगे जाते हैं क्या? नहीं। तो ये सब उनके गुण मनुष्याने लेना चाहिए. माणसाला आनंद जीवन जगण्यासाठी झाडांपासून आनंदी जगणे शिकावे हा विचार नक्कीच मनाला भावतो, पटतो. हाँ, ये अच्छा विचार है. अभी ये तो सब हमारे फीलिंग्स है. तो आपके भी और कुछ हो गए तो आप लिख सकते हो, खाली फीलिंग है नहीं लिखना है. तो ये पोयम में जो कुछ आया है उसका अर्थ यानी ब्रीफ क्वेश्चन जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए. सो लाईक करा, सबस्क्राईब करा.